इसका जो रेलेवेंस है ऐसा नहीं है कि ये कुछ साल पहले हुआ, इट्स अ पीरियोडिक फिल्म, ये 10-15 साल पहले वाला इंसिडेंट है. It's very very recent. How this film has been shot. हम एक सेम मतलब मेथोडोलॉजी से आते हैं. Like now that I'm exploring both of you, the way you are talking, the way I'm talking, like wow, it resonates with both of them. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मेरा फैशन सेंस, और मैं ऐसे कॉलेज में जाती थी where the more casual you are, the more underdressed you are was considered cool. आप मुझे बोलो कि आप एवरेस्ट बेस कैंप तक चले जाओ, मैं वहां भी चला जाऊँ, लेकिन मुझे लोगों से रिक्वेस्ट करना है पर्सनली. हेलो हाय गाइस, टेलीचक्कर में आपका स्वागत है. मैं हूं फरहान खान. फिल्म दंगे बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है. ट्रेलर को तो जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है एंड वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर द मूवी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद द एंटायर कास्ट ऑफ द मूवी दंगे. सो लेट अस वेलकम द कास्ट ऑफ द मूवी दंगे. हर्ष, निकिता, इहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेलीचक्कर में. वेलकम. बहुत थैंक यू. हर्ष, स्टार्टिंग विद यू, ये मैं बोलना चाहूंगा कि 90s और 80s के दौर पे इस तरह की मूवीज बनती थी जो कॉलेज दंगे, जो कॉलेज राड़ा जो बोलते थे ना, कि लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे कि वक्त हमारा है, युवा, शिवा, है ना, एंड मेरे अपने, जिसमें बोलते ना शत्रुघ्न साहब थे. तो इस यानी कि कहीं ना कहीं फॉर सम रीजन ये ऐसी मूवीज बनना बंद हो गई थी, बट कहीं ना कहीं विजय सर ने वो फ्लेवर फिर से जगाया है बॉलीवुड में. मेरा ऐसा मानना है एज अ बॉलीवुड पर. क्या कहना चाहेंगे ये फ्लेवर जो वापस से आ रहा है बॉलीवुड में? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? सर थैंक यू, आपने नोटिस किया और ये सारी फिल्मों के नाम लिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है, लोगों को पता है, क्यों नहीं है रीजन किसी को नहीं पता. तो वो हम विजय सर ने वो रीजन, तो हम लोग क्या ही आंसर देंगे लोगों ने क्यों नहीं बनाया. उन्होंने खुद एक सोल्यूशन दे दिया बाय मेकिंग दिस फिल्म, कि कॉलेज जो इतना एक आपकी लाइफ का एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चंक होता है आपकी लाइफ का, वो वाले चंक में आपकी सारी जो मेमोरीज बनती हैं लोगों की. अक्सर लोग कॉलेज की बातें करते हैं, मेरे आसपास के लोग, मैं तो नहीं गया था, पर लोग जो बातें करते हैं तो 2-3 ही टाइम की बातें करते हैं, बचपन की, कॉलेज की, या शादी में उनके क्या क्या हुआ था. तो ये शादी पे तो बहुत फिल्में बन रही, बचपन की बहुत सारी, लेकिन कॉलेज की स्टोरीज पता नहीं क्यों लोग कम बनाते हैं. विजय सर ने 3-4 लेवल पे इस चीज को सेटिस्फाई किया. कॉलेज की एक तो फिल्म बनाई, 2 लैंग्वेज में बनाई, 2 सेट ऑफ एक्टर्स के साथ बनाई, अलग अलग शूट करी. कोई शॉर्टकट नहीं कि डबिंग करा दिया एक ही एक्टर से, बार बार डायलॉग बुलवा लिया, या बाद में डबिंग थिएटर में, OTT पे भी डाल सकते थे, नहीं, थिएटर में लेके आ गए. सिर्फ इंडिया में ला सकते थे, नहीं, वर्ल्ड वाइड लेके आ गए. सो विजय सर को और टी सीरीज को हम लोग जो है वी आर सो हैप्पी एंड या हैट्स ऑफ टू देम. और एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ा और उसको पूरी जस्टिस के साथ रिलीज करें. अब उस चीज को देखना नहीं देखना, वो सब ये जो देखने भी, of course we are going to watch because trailer काफी पसंद आया है and we must thank Vijay sir for bringing this flavor in Bollywood definitely. लेकिन my questions to you is, we loved you in Kabir Singh and of course all the projects you have done. ठीक है, it has been a treat to watch you all the time. Be Khaki is one of my favorite series on. Yes, of course it is. We met in that time also. I spoke to you about it. But कहीं ना कहीं you are remembered as Kabir Singh actress. So do you think Kabir Singh को इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला कि कहीं ना कहीं फैंस जो है आपके बाकी के जो काम है ओवर शैडो कर रहे हैं, या ऐसा कुछ आया आपके दिमाग में? क्योंकि यू आर नोन एज कबीर सिंह एक्ट्रेस टिल टुडे. I mean, इसमें I can't have an opinion because whatever work I have done after कबीर सिंह, मैंने 3 फिल्में और एक शो मेरा जो है रिलीज हुआ है कबीर सिंह के बाद. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट डन एज वेल एज कबीर सिंह. जितना प्यार कबीर सिंह को मिला है उतना उन्हें नहीं मिला है. Even though my screen space and the substance of my character was way more in the other films. तो इसमें किसी को मैं दोष नहीं दे सकती. Of course they will remember me because people have loved that film so much. They've loved every bit about that film and my character, and I'm very thankful to that because वो film genuinely मेरे career का एक बहुत बड़ा turning point थी. I have received so much love and I've actually been offered way more work after Kabir Singh. तो मेरे को उस चीज को लेकर तो बिल्कुल शिकायत नहीं है. बस एक उम्मीद है कि I just hope जितना प्यार उस फिल्म को मिला उतना ही प्यार आने वाली फिल्मों को मिले, और उतना ही प्यार दंगे को भी मिलेगा. दंगे प्राइमरीली बिकॉज़ वो अभी आ रही है. यस, ऑफ कोर्स. एंड इहान, आई थिंक क्वेश्चन इज फॉर यू. इस कॉलेज फाइट पे ये है, कॉलेज दंगे के बारे में बोलिए. आपकी लाइफ में कॉलेज में नॉट दंगे इज अ वेरी हेवी वर्ड, बट कोई ऐसी राड़ा या कोई ऐसी लफड़े आपके लाइफ में हुए कॉलेज में?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लाइक जो मैंने इसमें कैरेक्टर प्ले किया है आई हैव लिव्ड अ वेरी डिफरेंट लाइफ इन कॉलेज इन दिस कैरेक्टर बट इट वाज एन एक्साइटमेंट टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज you know it's like you said like we've grown up watching these films college films and जो आपने rightly in the beginning बोला आई थी and कुछ टाइम के बाद बंद होगी and वो मेरा पहला डिस्कशन था when I met people I was like यार ऐसी फिल्में आती नहीं है but if you see in the West they are making it Euphoria and Elite and all that they are making this college drama but यहाँ पे बहुत टाइम से ऐसी फिल्म नहीं आई है so it felt very refreshing to go back to college days relive those days make friends on set have a great storyline have an amazing director backing it up it all felt like a part of like that good cult you know that wow we are part of something that is so exciting despite our efforts like sleepless nights it felt like let's give it our all because this is something that can make us and that's what all of us did in this film we literally like break a leg वो सब किया हमने and I would like to give the whole credit to the captain of the ship that's Bijoy Nambiar sir like the people who were working for him like most of them the ADs they were so hardworking and some of them were like interns so it was literally like for me it was that one man so we were all there on the belief of that man who was like the boss didn't talk much always focused always planning out his scenes हम ऐसा शूट करते थे हम 16 घंटे शूट करते थे 15 घंटे शूट करते थे हमको लिबर्टी थी सोने की एक्टर जो आता है वो तब आता है जब सीन आपका रेडी होता है बट जो आपका डायरेक्टर होता है वो आपका सीन प्लान करता है तो मतलब अगर एक्टर 6 बजे आ रहा है तो डायरेक्टर 2 बजे से सेट पे है आई रिमेंबर जब हम लास्ट के सीक्वेंस शूट कर रहे थे हमारी फाइट हो रही थी और मैं विजय सर को देख रहा हूँ दैट मैन couldn't even walk he couldn't even मतलब वो इतना एग्जॉस्ट हो गए थे and he was trying and I was like his legs are not working I mean it was the middle of the night you remember हमारी लाइन मैं ऐसे सर को देख रहा हूँ यार he was literally like so you fight and this happens and this and I was like हम सोए नहीं हैं because 16 घंटे हम शूट करते हैं and that man the passion he had because हमको तो ब्रेक टाइम मिलता है हम वैनिटी में जाते हैं रिफ्रेश होके आते हैं वो सेट पे मच्छरों के सामने गर्मी में प्लान कर रहे कुछ लाइट नहीं चल रही है ये नहीं चल रहा है hats off to that man मेरे को लगा था I think he is one of the hardest working directors that I worked with and he is never talkative about it he's a very silent man and does his work so smoothly so it was an honor literally an honor for me to share to be his actor and give life to the character that he has written. Take it a blessing for you. What do you think this movie, like this subject and this concept, of course, in youth oriented, youth से connect करती है. How important and relevant in today's time? It is so important and relevant. एक तो ये आजकल I won't say आजकल, but some two events. This is inspired from that. I won't get into the detail of that. So इसका जो relevance है ऐसा नहीं है कि ये कुछ साल पहले हुआ. It's a periodic film. ये 10-15 साल पहले वाला incident है. It's very very recent. How this film has been shot, I think that's also Bijoy sir's sensibility. How he looks at his cinema. He shot it very very real, very very raw. There is nothing that is done up. अगर आप हमें भी देखेंगे, we are not those college kids who are coming with extreme makeup. We are coming in prim and proper clothes. No, we are actually like how real college kids are. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी मेरा फैशन सेंस और मैं ऐसे कॉलेज में जाती थी where the more casual you are, the more underdressed you are was considered cool. And I think that's what we've also done in this. We've kept it very easy, very relatable because आजकल अगर आप देखें तो कॉलेज के बच्चे ऐसे ही ड्रेस अप होते हैं. So coming back to the thing that I'm saying that it's very raw and real, so people will be able to relate to it. Even the behavior that they've shown of each and every character, बहुत सारे parallel tracks है इसमें. Of course, we are focusing on Pekar's side, but when you watch the film, you realize there are many characters who have their parallel tracks going on. And he's tried and covered a lot of topics, a lot of issues that you face when you are in college. And I can say it from my experience of watching films in the cinema, they have not been discovered, they have not been touched before. So वो आपको इसमें देखने को जरूर मिलेगा. And I mean, I personally like watching cinema that I relate to and not something which is glossy and done up. So that's what this film has got to offer you.
Beautiful. That's a lovely put up. Ihan, this one is for you. How will you define your character, and plus an actor of your caliber, how important this movie is for you during this time? I mean, I would just like take a little glimpse from the trailer. If you've seen about the first opening of the teaser, like there's some people are getting dragged, and I feel like somewhere there's also a message in the film. This dragging has plagued our institution since a long time, and what happens to people in their childhood or in their college days, they kind of have that mark for the rest of their lives. So somewhere that's also part of our film, and as Nikita rightly said, there are so many aspects of the film. It's not just a film about these two people that you see on the poster. There is one, like, why pick a side. There should be a why, because everyone has their own reasons of why they are doing this and what caused the riot, what caused dange, and that will only unfold when you guys go to the cinemas and watch our film. And also, what was the second part of the question? So how important is movie as an actor of your caliber, and you have done so much? As I've been giving my interviews today, as I said, like, it's every movie for me at this point of my life is do or die. You know, I have a lot of hopes from this film, that I hope this is a game changer, and the next thing I know, like in 4 or 5 months, I have scripts coming to me and people want me to be a part of their films. For now, I'm being optimistic. It feels like that there's a wave of change, that maybe people will perceive and start taking us seriously after watching this film. Like, maybe some people don't know us. Maybe this will get us that reach in the industry. Because Sir already has a great name in the industry. Like, whoever I show the trailer or whoever I tell that I've done a film with Bijoy Nambiar Sir, they only have good words to talk about it. So with that following, through him, maybe people see our performances, and if we have justified our characters, I hope and pray it brings change and many more films to all three of us. And hame aisa, like Bijoy sir said it on the launch, like maybe there will be an ego and all that, but you know, like talking now, like I'm exploring them, I'm exploring myself, and I'm wondering how alike are we, how alike are our thoughts. I think that's why we shot so stressful. हम एक सेम मतलब methodology से आते हैं. Like, now that I'm exploring both of you, the way you are talking, the way I'm talking, like, wow, it resonates with both of them. So that's why there was never any issue regarding an ego on set. We were always like this, you know. Great, that's lovely. Harsh, my question is to you, few days ago, like आपने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप कुछ पैम्पलेट बांट रहे हैं, you just with the crowd. उसके बारे में बताइए कि क्या था वो सिनेरियो, and because you were getting so much of love all the students in the college, so क्या था वो सिनेरियो? सर, वो मेरी एक कैसे कह सकते, एक ट्राई है मेरा दिल से. मुझे सच में नहीं पता और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप मुझे बोलो कि आप एवरेस्ट बेस कैंप तक चले जाओ, मैं वहाँ भी चला जाऊँ, लेकिन मुझे लोगों से रिक्वेस्ट करना है पर्सनली कि प्लीज़ ऑनलाइन चीज़ें आने का वेट मत करिए. बहुत मुश्किल से फिल्म थिएटर में आई है, तो वेट मत करिए कि कब उतरेगी और कब हम देखेंगे. वो इवेंचुअली हर फिल्म के साथ होता है. Also, I would like to say, please watch this film in the theaters because of the BGM of this film. This is something background music. This is something background music. This is something I can assure you, because आप हर तरह के टीवी होते हैं, हर तरह के फ़ोन होते हैं, और लेकिन जो क्वालिटी की ये फिल्म है, leave aside the actors and our hard work and everything, जो इस फिल्म की क्वालिटी है, जिसके लिए बिजॉय सर का नाम है इंडस्ट्री में, the technical aspect, watch it for them, because it is a cinematic experience. You know, if you see the trailer, जो सबसे ज़्यादा common feedback है, the positive feedback is that, oh my God, the music. The music of the film. The music, and Bijoy sir's music sensibility is amazing. जो गाने भी इस फिल्म में है, वो बहुत ही प्यारे गाने हैं. तो just, I mean, if that's why I keep saying it. Of course, हमारे लिए देखिए जो भी है, but for yourself, अगर आपको सच्ची में इस फिल्म का मजा लेना है, for the love of cinema, go to the theater and experience it. मैं आपको बताऊंगा, मैंने लॉन्च पे देखा with good speakers, and I literally had goosebumps. And I went home, I watched it on my phone. I was like, okay, great. And then I heard it on my home system. And I was like, wow.
and then somebody else showed it on my phone. I'm like, okay. So, you know, it kind of, the sounds, the BGM and the way it's shot, it will only, you will only feel an amplified experience when you go to the theater and experience a film like that. Yes. I mean, आपने वो एक क्वालिटी की बात होती है, वो आपने थिएटर में देखी होगी. आप हम सबका परफॉर्मेंस छोड़ दो, आप बस वो लाइटिंग देखो, the way the shots are being taken. It's like if you screen grab anything, it feels like wow. It's full of emotions. You guys are because वो glimpses जो है trailer में लगाए and we got the opportunity to see the trailer on a big screen, so that was a great cinematic experience. Yeah, it's basically a visual and audio treat. True. Yeah, to your eyes and ears. That's lovely. Okay, guys, thank you so much for this lovely conversation. Before going, 1st March is the date, and for all the fans, what do you have to say? Parting words for your fans, Harsh? Parting words ना हो तो अच्छा है. This should be something which is in continuation. तो आप इहान, निकिता, हर्ष या कोई भी एक्टर जो बाहर से आते हैं, उनको सच में अगर आप उनका काम पसंद करते हैं तो आपको थिएटर में टिकट लेना है. मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर ये पूरी जो हमारी एक्टर्स की, नए एक्टर जो हम लोग बाहर से आते हैं, हम सबके लिए है. एंड यू वांट टू शो सपोर्ट. लैपटॉप पे डाउनलोड करने से वो सपोर्ट हमको नहीं मिलता है, वरना मेरे जैसे ही हाल होगा. 8 साल हो जाएंगे, आप लोग कमेंट्स और रील्स बनाते रहेंगे, पार्ट 2 नहीं आएगा. आप प्लीज थिएटर में जाइए, टिकट. Nikita, can you give us that? I'm just going to add on to this कि आपको जो मज़ा आता है, जिस रीज़न की वजह से आप फिल्में देखते हैं, प्लीज़ गो टू द थिएटर एंड एक्सपीरियंस दिस entire film that we've put together with all our hard work, because I feel that's when you'll do justice to our film. तो अपने मज़े के लिए इसको थिएटर में जाकर जरूर देखिए 1st March को. बिल्कुल, definitely. Ehan, what about you? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अब अगर आपने फाइट क्लब जैसी फिल्में पसंद करते हो, अमेरिकन हिस्ट्री है, इतनी सारी फिल्में हैं, if this trailer gets your attention and it makes you curious and you want to unfold what the story is about, I wouldn't say like we worked really hard. All of the actors work hard for their films, the directors work hard for their films. If this film, this poster makes you curious, like what happened with these two guys, what it is about, हमको समझ तो नहीं आ रहा है ट्रेलर में, but it looks exciting. For the sake of background music, for the sake of Vijay Nambiar's work, I would say just go and experience it in the theater, because I wouldn't want to compare it with Interstellar or Inception, but आप Interstellar फोन पे नहीं देख सकते. अब वो क्रिस्टोफर नोलान को गाली देना हो अगर आप उसकी फिल्म फोन पे देखते हो. सो आई वुड से इस फिल्म को भी आप उस वैसा दर्जा ट्राई करो देने का. आप थिएटर जाओ, हमारी फिल्म को देखो, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनो. अच्छी नहीं लगे वो तो बाद में आप फिल्म देख के डिसाइड करो, बट wouldn't take much to go to the theater and spend 2 hours on this film. Of course, हमें अच्छा लगने वाला है. And 1st March is the day. Thank you so much for this conversation. Thank you. And wishing you all the best for Dange and all your upcoming projects. Thank you. So this was Harsh, Nikita and Ehan for their movie Dange. What are your views on this exclusive interaction and how excited are you for the movie? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Tellychakkar. Hi guys, this is Nikita Datta and you're watching me on Tellychakkar. Hi guys, this is Harshvardhan Rane and you're watching us on Tellychakkar. Hi guys, I'm Baat and you're watching us on Tellychakkar.